Hey everyone, welcome to पर्दा लाइव. This is me Anai Komagan. आज टुडे मैंने IPL ऑक्शन 2022 देखा. बहुत ही मज़ा तो आया, साथ ही साथ बहुत बुरा भी लगा बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो अनसोल्ड गए. और साथ ही साथ जो ऑक्शनीर हैं, उनका नाम है ह्यूज एड मीडीज. आई थिंक ही कोलैप्स्ड इन बिटवीन. वो देख के काफ़ी बुरा लगा. आई थिंक ड्यू टू सम हाइपर टेंशन एंड डिहाइड्रेशन. वो देख के थोड़ा बुरा लगा बिकॉज सी एनीवे आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल मेगा ऑक्शन बहुत बड़ा इवेंट होता है. इट्स बिगर इवेंट देन सम ऑफ द लीग्स इन द वर्ल्ड, सम ऑफ द क्रिकेट लीग्स इन द वर्ल्ड. एंड आई एम very sure that IPL's brand value goes up and up. And new sponsor for IPL, new title sponsor, Tata IPL. So it's going to be Tata IPL 2022 and for the few upcoming years as well. So these are the few updates about the auction. Auction was held at ITC Gardenia, Bengaluru, and it was a nice auction. I think it was arranged very well because from the looks of it on Star Sports on TV, काफ़ी अच्छा लगा देख के, काफ़ी पॉश लगा. एंड every IPL auction you have a lot of these strategists, analysts and team owners, brand ambassadors, or those who are not involved at cricketing level as well, be it for KKR, our beloved Shah Rukh Khan's kids, Suhana Khan and Aryan Khan, they were there. And for other franchises as well, SRH के लिए भी Kavya Maran, who is also looking after the business operations of Sun TV and Sun Pictures. She was also part of the Sunrisers Hyderabad का जो what do you say, contingent. देख के मज़ा आया दोस्तों. So let's look at the top expensive players on day one of mega auction, IPL mega auction 2022. I know there were a lot of Indian players, a lot of foreign players, a lot of these players जिसको आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. ये सब बहुत सारे लोग थे. बट आई वॉन्ट टू talk more about them because these players form the core, or these players form the balance of the playing 11, and these players are going to be the mainstay. जहाँ तक mainstay का सवाल है, they will be definitely there in the playing 11. So it's very obvious कि जो भी franchise एक player के लिए 5 करोड़ या 10 करोड़, even above 14 crores one player has gone, so they will be definitely there in their playing 11. Otherwise it doesn't make any sense to me, because see, that's how auction works, that's how any tournament works. So IPL mega auction का जो meaning है ना, it starts from the word when you have such expensive players in your playing 11. Let me be very clear about it. So let's look at the top expensive buys. चलो, इंडियाज अपकमिंग विकेट कीपर बैट्समैन बोल सकते हैं आफ्टर ऋषभ पंत, जिसका स्टॉक्स हाई है. आई थिंक इट्स ईशान किशन. 15.25 crores ही ब्रोक द बैंक फॉर मुंबई इंडियंस. अंबानी लोग सोच रहे होंगे, लेट्स गो फॉर दिस प्लेयर, लेट्स ग्रूम दिस प्लेयर मोर, और बड़ा बनाते हैं इसको अगला कप्तान बना देंगे, अगला कैप्टन बना देते हैं. रोहित शर्मा के बाद कोई तो चाहिए ना टीम लीड करने के लिए. फॉर दैट पर्पस एंड वन मोर रीजन, ओपनर प्लस विकेट कीपर, ये बहुत ही सॉर्टेड ऑप्शन लगता है मुझे. बट 15.25 crores, इज ही वर्थ दैट अमाउंट, इज ही वर्थ दैट प्राइस टैग? आई डोंट नो, क्योंकि लास्ट ईयर जो उनका परफॉर्मेंस था उतना खास नहीं था. टू बी वेरी फ्रैंक, ही डिड नॉट प्रॉस्पर इन मेनी सिचुएशंस, इन मेनी क्रूशियल सिचुएशन उन्होंने अच्छा नहीं किया. And it's going to be very tough for him to justify this particular price tag, because he is one of those youngsters who are looked up to, and it's very important for this guy to do very well. So let's see. So Ishan Kishan to Mumbai Indians for 15.25 crores, highest player after Yuvraj Singh and highest Indian player after Yuvraj Singh. So congrats Ishan Kishan, अच्छे से करिए. Then let's talk about Deepak Chahar, the second most expensive buy at first day of IPL Mega Auction 2022. Deepak Chahar for 14 crores. Yes, he gets more than what Dhoni is getting, MS Dhoni is getting. वाह, कोई इतना ट्रस्ट मैंने देखा नहीं on any pacer or any player, for that matter. क्योंकि CSK, yes, चेन्नई सुपर किंग्स बोलिए या चेन्नई सीनियर किंग्स बोलिए, they never go for players who are above
व्हाट यू से, अबाउट 10 करोड़ के ऊपर वो लोग कभी जाते ही नहीं है. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेयर कॉल्ड दीपक चहर दे वेंट फॉर 14 crores. दैट itself makes everything easy for them. I think on paper he's a solid player, and while playing also he's an all-rounder. See, he's a swing bowler at the same time, must pacer hai, lekin he's an all-rounder. So good package. The next option is going to be my favorite, my man. You can say my captain, my future. What do you say? I'm going to support him till he plays for our country, till he plays for my franchise. You know the clue. Let's go and talk about it. Yes, doston, my man, my team man, my most favorite player right now, Shreyas Iyer. Yes, Shreyas Iyer for 12.25 crores to my most favorite team and the team I support in Indian Premier League. Yes, for its owner, my dear idol Shahrukh Khan. शाहरुख खान का टीम है, मेरा टीम है. इस टीम को मैं 2009 से सपोर्ट कर रहा हूं एंड आई लव दिस टीम. इस टीम का ऊपर नीचे सब मैंने देखा है. एंड गंगुली को निकाला, उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए, स्प्लिट कैप्टनसी. उस जमाने से मैं केकेआर का बहुत बड़ा फैन हूं और बहुत बड़ा सपोर्टर हूं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गौतम गंभीर आए, उसके बाद उन्होंने चेंज कर दिया. सुनील नारायण को लाए, फिर एंड्रे रसल को लाए, पूरा कोर चेंज कर दिया. द वे ही मेड दिस टीम ना, ब्रिलियंट. आई थिंक kudos to Gautam Gambhir for making KKR what it is today. And I hope Shreyas Iyer does the same thing, because Shreyas Iyer, coming from the experience of captaining Delhi Capitals for 2 seasons, yes 2 seasons. Delhi Capitals उसके पहले playoffs गए नहीं थे. For I think for a long time they did not go to the playoffs. But after Shreyas Iyer came in 2018, midway through IPL 2018, गौतम गंभीर को लगा कि श्रेयस अय्यर ही बन सकते हैं कैप्टन ऑफ दिल्ली डेयर डेविल्स. ओके, दिल्ली डेयर डेविल्स. उसके बाद 2019 में ही बिकेम फुल टाइम कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स. दे वेंट टिल द प्लेऑफ्स. दे प्लेड वेरी वेल with the squad they had, and after that 2020, where the IPL was held in UAE due to COVID situation here in India, वाह, श्रेयस अय्यर का कैप्टनसी देख के मजा. ऑब्वियसली लोग बोलेंगे रिकी पॉन्टिंग का मास्टरमाइंड है, रिकी पॉन्टिंग का गेम प्लान होता है, ऑल दीज मैचअप्स एंड पिचअप्स एंड ऑल. आई टोटली अग्री विद दैट, but you need someone to execute that. I think Shreyas Iyer is brilliant in executing that, no doubt about it. He's a cool customer. He knows what he is doing. When it comes to batting, he can hit when the strike rate, when the required rate is very high. But definitely he needs to improve his strike rate, no doubt about it. But he's a brand. He's a brand because his brand value is increasing. Everyone, see, IPL is more about looking at brand value. दोस्तों, you have to understand this. अगर आपको लगता है कि IPL is all about cricket, IPL is all about talent, all about grooming this young talent, what do you say, earthing this talent from कोने कोने of India, वो सब नहीं है दोस्तों. It's just an eye wash. People would like to believe that it's more about brand value. Let me be very honest with you. And Kolkata Knight Riders need a brand value player more than a, what do you say, solid player. So Shreyas Iyer justifies both. He's a solid player as well, and at the same time he has a great brand value. And upon that, उसके ऊपर बोलूँगा तो अभिषेक नायर. Yes, अभिषेक नायर के फेवरेट प्लेयर है श्रेयस अय्यर. दे बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. सो सब लग ही रहा था कि श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो जाएंगे, लेकिन व्हाट विल बी इज प्राइस टैग, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था. एंड डेफिनेटली आरसीबी, they were trying to go for him in the auction, but somewhere down the line उनको लगा he is bit overpriced, हमको नहीं जाना चाहिए. But I was pretty angry on Delhi Capitals, no? Delhi Capitals के ऊपर बहुत गुस्से में था, क्योंकि they know one thing कि उनका और श्रेयस अय्यर का जम नहीं रहा है. श्रेयस अय्यर doesn't want to be part of Delhi Capitals because he was not given the captaincy option and he was not the first retention. These were all there in the reports, media reports and all these verified reports. So why did they go for him? Why did they hype his price? Just to make some kind of statement, or just to, what do you say, just hype करने के लिए वो सब किया उन्होंने.
It was looking bit unprofessional to be, but okay, that's how auction works. That's how auction everywhere works. Okay, when it comes to even auctioning land or real estate projects. So I have been to some of those events. So pata hai, auction happens like this. So I'm pretty sure that these kind of things really come up. But I feel it's justified for Shreyas Iyer because he's going to be part of the core of KKR, and definitely he's a prospect for Indian team captain as well for all formats. So great option, KKR Kolkata Knight Riders, for investing in Shreyas Iyer. देखते हैं कैसे करते हैं. I hope he takes us till the playoffs at least. That's the real hope. And if we win the title, if we go to finals, I think I'll be the most happiest, because I was the most happiest when Shreyas Iyer was sold to Kolkata Knight Riders. So let me be very clear with that. Let's go to the next expensive buy. Shardul Thakur for 10.75 crores to Delhi Capitals was some kind of a surprise, because I was expecting Chennai Super Kings to retain him or buy him back, or RCB. I was thinking they will go for Shardul Thakur. And then somewhere down the line, I thought either of Lucknow Super Giants or Gujarat Titans, ना, they will definitely go for him. ऐसा लग रहा था कि वो लोग जाएंगे, क्योंकि he is a mass player. Mass player मतलब लोगों को लगेगा mass player मतलब क्या? Mass player का मतलब क्या है? Definitely he can finish games. He can finish with his batting. Definitely he can get you wickets. People will say lucky wickets, or people will say ओ ही इज़ अ लकी बॉलर यार, इसको फुल टॉस में इसको विकेट मिल जाता है, प्लेड ऑन हो जाता है, LBW सब मिल जाता है, ये सब लक के वजह से होता है. वैसे खास बॉलर नहीं है वो सब मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मानता नहीं हूँ, लेकिन बट ही हैज़ दैट पोटेंशियल, ही हैज़ द पोटेंशियल टू डू वेल, नो डाउट्स अबाउट इट. So definitely Lucknow and Gujarat missed out on a great player like Shardul. Delhi Capitals smart. This is a smart buy. 10.75 crores. Okay, it's justified. Shardul Thakur के लिए it's justified. Yes. I just don't understand RCB का management. I think उनको मैं समझ नहीं पाता. I think Mr. Nags, उनको मैं जितना समझ सकता हूँ ना, RCB को उतना मैं समझ ही नहीं सकता. क्योंकि दे हैड द ऑप्शन टू रिटेन समवन लाइक वनिंदो हसरंगा, फिर 10 करोड़ देख के वो लोग फिर खरीद लिए. समझ में नहीं आता कभी कभी, चलो ऑप्शन है, चलो खरीद लेते हैं, ऐसे खरीदते हैं वो लोग. इट वॉज गुड पिक. डेफिनेटली वनिंदो हसरंगा इज इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, इज अ गुड ऑलराउंडर. आई वुड रियली रेट हिम एज समवन हु इज लाइक रविंद्र जडेजा. ही इज डेफिनेटली अ गुड ऑलराउंडर. ही इज अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर श्रीलंकन क्रिकेट. He's doing very well. He can turn out to be a match winner on his day. Definitely वो क्या बोलते हैं, he can win you, he can finish games for you. He's that kind of a player. He has great attitude यार, definitely. Usually Sri Lankans का problem ये होता है कि right now I am talking about the current generation of players. They are not quite regular in the team, so I don't know. It could be because of the management, or it could be because of the cricketing board or something. But if a player plays one format, other format they don't play. But this guy is playing all formats, and I'm quite happy Vanindo Asaranga is part of RCB. They will groom him well. He will do very well. He will form the core. Definitely he'll be part of the core along with Virat and AB is not there. So Virat and Maxwell. So looking forward to see Vanindo Asaranga once more in RCB colors. Uske baad Nicholas Puran went to Hyderabad for again 10.75 crores. He did not hit. He went for 3 ducks last IPL. You can say he was a failure last IPL, definitely. But 2020 IPL went well for him. He hit most sixers, I guess. So that was great. I think that ability to finish games, ability to hit sixers, I think SRH को ऐसे एक प्लेयर की ज़रूरत थी. That's the reason they went for Nicholas Puran. Plus he is some kind of a full-time captain for West Indies cricket team, because Kieron Pollard is unavailable for most of the matches. So that also makes sense, because Kane Williamson अगर नहीं है playing 11 में, तो probably they could go with someone like Puran, and definitely he is a wicket-keeper option
विकेट कीपर प्लस हिटर ऑप्शन भी बहुत मस्त ऑप्शन है दोस्तों. सो आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद का ये वाला बुलसाई था, बट 10.75 करोड़ थोड़ा ज़्यादा हो गया. आई थिंक around 8 to 9 crores was justified definitely. Then Harshal Patel, Purple Patel बोल सकते हैं उनको. He played for India also. India versus New Zealand PTM T20 series खेला उन्होंने. Great player. In my opinion, he has all-round ability तो है. Bowling अच्छा है उनका. Definitely he has these cutters, slow cutters, Yorkers. His Yorkers are brilliant. Definitely that hat-trick against Mumbai अच्छा था, बहुत मज़ा तो आया था, ऐसा नहीं कि नहीं. बट डेफिनेटली आई फील एक्स फैक्टर मिसिंग है उनमें. सो आई पर्टिकुलरली फील ही इज ओके टिल 7 crores, बट 10.75 crores इज बिट टू मच फॉर हिम. आई फील, आई थिंक माई फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, माई को SRKN Sricharan Bellur, he will agree with me. Sricharan, if you are watching this particular video, it's for you. I think even you know थोड़ा ओवर प्राइज्ड हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया प्राइस टैग, बट ओके फाइन. ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ एन एसेट. डेफिनेटली ही विल बी पार्ट ऑफ द कोर. सो जस्टिफाइड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लेयर. नेक्स्ट इज, आई थिंक ही इज़ अ कूल प्लेयर एंड एट द सेम टाइम आई फील ही इज़ फ्यूचर फॉर इंडिया. Definitely he'll be part of any of the upcoming ICC tournament squad for Indian cricket team. I have that much belief, or you can say I trust him that much. I trust him that much. Avesh Khan. Avesh Khan looks like a street smart cricketer, and his Yorkers are brilliant, and pace. He has raw pace. That's very, very important when it comes to IPL or international tournaments, anything. So I feel he's justified for 10 crores to Lucknow. I feel it's amazing buy. Lucknow Super Giants did very well. So kudos for getting Avesh Khan. Then our dear KKR had to let go one of their mainstay speedster बोल सकते हैं, या mainstay X factor बोल सकते हैं. He's an X factor bowler. Definitely X factor bowler बोलूँगा मैं. Lockie Ferguson. Amazing bowling. His bowling action is too cool. Definitely KKR should have retained him over someone. Definitely they should have retained him or tried to buy him back. वो सब हुआ नहीं. Sadly he went for 10 crore to Gujarat. So Gujarat Titans new team. I think they are making a good team. Gujarat Titans, they are making a good team. But only thing, Lockie Ferguson, how he will stay in their plans, वो सब देख के पता चलेगा. I think Ashish Nehra will make things smooth for them. So let's hope. Then Prasidh Krishna, famous Krishna. Yes, he is also a player which KKR made. KKR players are doing very well in this auction. Not for KKR, for other teams. So KKR आके जाओ, कैरियर बन जाएगा. वैसे हो रहा है अभी, तो अच्छा है. KKR आके जाओ. मुझे भी KKR में कोई जॉब में चला जाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा. Prasidh Krishna also went for 10 crores. He went to Rajasthan Royals. Rajasthan Royals also mastermind. Sangakkara, he is a mastermind. He knows how to pick players. I'll talk about Sangakkara when I discuss Rajasthan Royals का full squad ना. That time I'll discuss. So अभी के लिए इतना ही ख़त्म कर देते हैं. फिर चलो let's talk about the full squad. हर टीम का स्क्वाड का डिस्कस करेंगे. We'll talk about what all they have, what all they don't have, and what all they should go for the next day, that is tomorrow. So you will be watching this particular video when auction का day 2 चल रहा होगा. So please bear with me because creatively थोड़ा time लगता है, and full list आने में थोड़ा time लग गया, and auction went till very late. So it took time for me to make this particular video. So sorry if this video is very late, but I'm doing this video out of my love for cricket, out of my love for IPL, and the hype also. Definitely the hype is there, and the hype is valid. And I love IPL more than anything, not more than Indian cricket team. Definitely Indian cricket team इधर है तो IPL just इधर है. That's all. चलो बात करते हैं. So guys, actually मैं most expensive buys और साथ ही साथ फुल स्क्वाड ऑफ ईच एंड एवरी IPL टीम और फ्रेंचाइज बनाने वाला था, लेकिन
द रियल प्रॉब्लम वॉज कि मुझे फुल स्क्वाड तो मिल गया आफ्टर डे वन ऑफ आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं बात कर सकता हूँ ऐसे कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फुल स्क्वाड अगर मिल जाएगा ना आफ्टर डे टू ऑफ मेगा ऑक्शन, आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर डिस्कशन, क्योंकि तभी हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन क्लियरली टॉक, क्योंकि एक फुल स्क्वाड मिल जाए ना, देन वी कैन टॉक अबाउट इट। अभी अगर बात करेंगे थोड़ा हाफ बेक्ड लगेगा। इट विल बी लाइक आई एम गिविंग माई हॉनेस्ट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एन एक्सपर्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। I'm a cricket lover. At the end of the day, I was a cricketer. Once upon a time, I used to love playing cricket. Even now, I love playing cricket. Anything regarding cricket, you know. क्रिकेट देखने में मज़ा आता है, क्रिकेट के बारे में बात करने में मज़ा आता है, कौन फ्यूचर कैप्टन बनेगा वो सब बात करने में बहुत मज़ा आता है। सो लेट्स कीप दैट डिस्कशन असाइड। पर अभी के लिए आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो इनटू मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस प्लस फुल स्क्वाड। इट्स गोइंग टू बी ओनली मोस्ट एक्सपेंसिव बाइस। सो ज़रूर आपने फुल वीडियो देखा होगा तभी तो आप यहाँ तक आए होंगे ना। तो ज़रूर आपने एंजॉय किया होगा, तो प्लीज़ डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग क्रिकेट कंटेंट के साथ बहुत आने वाले हैं। क्योंकि क्रिकेट इंडिया का एक ऐसा रिलीजन है ना जहाँ पे हेटरेड नहीं है, जहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सब एंजॉय करते हैं, सब डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ सब गालियाँ देते हैं। बहुत कुछ मज़ा होता है ट्विटर पे, फेसबुक पे। बहुत लोग पनौती पोस्ट भी डालते हैं, महापनौती लोग बहुत भरे हैं इस दुनिया में। सो दे डू जिंक्स एंड ऑल, बट टोटली इट्स फाइन। सो कल मैं आऊँगा, आई विल कम विथ अ फ्रेश वीडियो अबाउट फुल स्क्वाड्स ऑफ ईच एंड एवरी आईपीएल टीम। आपको बहुत मज़ा आएगा उस वीडियो में, क्योंकि यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी। क्योंकि अभी तक आपने जो भी देखा, आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज एंड हाउ दे विल फिट इन ईच एंड एवरी टीम एंड कंपेयर टू देयर ओल्ड फ्रेंचाइज, कंपेयर टू देयर ओल्ड टीम। तो बात करते हैं दोस्तों कल, डेफिनेटली मज़ा आएगा आपको और मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। अभी के लिए अलविदा और एंजॉय कीजिए डे टू ऑफ आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022। एंड बिफोर दैट आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू मिस्टर चारू शर्मा। आई थिंक उनको मैंने पहली बार टीवी में सेट मैक्स में देखा था। ही वॉज प्रेजेंटर फॉर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 एंड 2003 वर्ल्ड कप वॉज वेरी स्पेशल फॉर 90s किड्स। आप सबको पता है, ऑल दीज 90s किड्स जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आई वॉन्ट टू टेल देम वन थिंग। चारू शर्मा, ही वॉज अ ग्रेट प्रेजेंटर दोज डेज। आई थिंक ही वॉज अ रेगुलर फॉर सेट मैक्स। जब भी सेट मैक्स में मैच होता था, आई थिंक ही इज अ ब्रॉडकास्टर, आई थिंक ही इज विद द ब्रॉडकास्ट टीम एज वेल। I don't know if he is with the Star Sports team right now, because I don't have the information for that. That's the reason. But he stepped up after huge Edmedes collapsed. That was great of him. Full responsibility he took, because he has never done the auctioning part. और जिस हिसाब से उन्होंने किया मिस्टर चारू शर्मा, I think we have to validate him. We have to salute him for doing this, because it's not easy to do auctions, my dear friends. Because it's tough closing deals, closing such big deals. You know, a lot of big wigs are there in the same room and under one roof. So it's very tough. You will be under pressure. You will be under tremendous pressure. So huge thanks and huge, what do you say, shout out to Mr. Charu Sharma. I hope he watches this video someday or the other. Because I hope to meet him someday or the other. Because अभी तक जब भी मैंने मैच देखा है ना सेट मैक्स में या सोनी नेटवर्क पे ना, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हिम ऑन स्टार नेटवर्क। सो फॉर दैट इटसेल्फ आई एम रियली हैप्पी कि उनको मैं बहुत दिनों के बाद देखा, बहुत सालों के बाद देखा। या आई सम, व्हाट यू से, आई हैव सम काइंड ऑफ फैसिनेशन टुवर्ड्स हिम। आफ्टर हर्षा भोगले आई कुड रिलेट टू द नॉस्टैल्जिया। दैट वाज वेरी ब्रिलियंट यार। सो आई होप ही कंटिन्यूज एज द ऑक्शनियर टुमारो एज वेल। सो लेट्स सी, एंड तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, एंजॉय कीजिए, बाय।